Okay. So good afternoon, everyone. Good afternoon, my future chartered accountants, my young friends. And good afternoon, Tarun. Good afternoon, Ritu. I am very much fine, beta. And what about you? Aishwarya, beta, good afternoon. Ritu is saying, sir, मेरी previous class miss हो गई थी. बेटा recording lecture आप please देख लीजिए. Good afternoon, Janvi, Pratibha, Soumya Ranjan, Pramod, Ananya, Rahul, Purva, Prasanta. Good afternoon, everyone. Vrishali Patel, Kashish, Mahek, good afternoon, beta. Harleen, Hanin, Ritu, Shruti, Purva, Ayushi, Manish, good afternoon, beta. Lisa, Ashutosh, good afternoon, everyone. So, this is the second day of Unit 3, and actually, it is fifth lecture for Indian Contract Act. And at this point, we will complete 50% of Indian Contract Act, right? So, Tamanna, good afternoon, beta. Yash, Ritu, good afternoon. Ria, good afternoon, beta. So, this is the time for the test. All of you have promised that you will get the revision, what we have discussed in the last class. So, we will try that all of you get 10 on 10 in the today's test. Okay? All the best to all of you. I'm sharing the screen for test. Good afternoon, Nikhil, Krishna, Manmohan, Himanshu, Shreya. Good afternoon, everyone. रेफ्तुनिसा, good afternoon, बच्चे. चलो भाई स्टार्ट करते हैं. पहला रिवीजन करेंगे. Let's discuss the minor. Section 3 Indian Majority Act. Minor, the person who is under the age of 18 years. Legal rules regarding the contract with minor. Agreement with minor is void ab initio. Void ab initio का मतलब बताया था मैंने बच्चों. Void from very beginning. This agreement cannot be ratified. Ratified means confirmed even on the attaining the majority. Minor cannot be asked to compensate or pay for any benefit under a void agreement. Minor can misrepresent his minority. Minor can not enter into partnership as per Indian Partnership Act. But I'm repeating. Minor cannot be enter into partnership as per Indian Contract Act, but Partnership Act allows him to enter only in the benefit with the permission of all other partners. Minor is not liable, so he cannot be declared insolvent. Parents and guardians are not liable for the contract entered by the minor, and minor can be agent without incurring any personal liability. In case of joint contract with minor and adult, only adult is liable, minor will not be liable. An adult can be surety, that is guarantor for the minor. A minor may acting though his lawful guardian became a shareholder. Minor is liable for tort. Tort means civil wrongs. Minor is personally liable for contract for the benefit or supply of necessaries entered by the guardian in the scope of authority. So please give 1 minute on this slide, everyone. एक मिनट दीजिए इसको और फिर आगे बढ़ते हैं. Janvi is asking, so who is the today's guest? Wait. इसको पढ़ लीजिए एक बार, रिवाइज कर लीजिए बच्चों. लाइबिलिटी मींस, लाइबिलिटी का हिंदी मतलब दायित्व होता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं, कुछ पे करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लाइबिलिटी.
मेरे को तो ये समझ में आता है बच्चे. I think you, Yash, you are not from, you are not the commerce student. Next, person of unsound mind. Unsound mind, I've told you in the local language, it is a mental person, mad person. And there are three types of unsound mind: idiot, lunatic, intoxicant. Idiot who is unsound all the times. Lunatic generally unsound, but sometimes can be sound and can contract only when he is of sound mind. Intoxicant generally sound mind, but sometimes becomes unsound and cannot contract when he was unsound mind. Burden of proof. Lunatic, providing of in case of lunatic, the person who says the contract is valid, he has to prove that the contract was entered at the time when the lunatic is not a sound mind. In case of intoxicant, person has to prove that contract is void, contract is entered at the time when the person is not of a sound mind. Disqualified by law, alien enemy, foreign sovereigners, corporation, insolvent, convicts. ठीक है. प्लीज प्रिपेयर द सेल्फ असेसमेंट टेस्ट शीट. ये आंसर शीट प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि पहला टेस्ट हमारा केवल यूनिट पार्ट 1 का है और जो हमारे दो टॉपिक थे कोर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस वो हम कल कवर करेंगे टेस्ट में. आज हमारे जो गेस्ट हैं वो पुराने ही हैं, दामोदर भाई हैं आज के गेस्ट. चलिए, होपफुली ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयर्ड. The requirement that the parties to an agreement must be competent to contract is laid in section 10, 11, 24 or 25. The answer is section 11, section 10 for essentials. Next question. Which of the following persons do not fall in the category of persons of unsound mind? Which is not covered in the category of persons of unsound mind? Idiot, lunatic, alien enemy, drunken person, who is not the person of unsound mind. Shreya, Parth, you need not to send the answer. This self-assessment test. The answer is alien enemy because idiot, lunatic, drunken are the persons of unsound mind. Next. As a general rule, an agreement with or by a minor is void ab initio, voidable, valid, unlawful. The answer is void ab initio. And a general rule, an agreement with minor is void ab initio. Tanvi is asking, sir, what is the alien enemy? Alien enemy, बेटा मैंने कल डिस्कस किया था. Alien enemy is a citizen of the country. Which country is in war with our country? अगर कोई कंट्री अपने देश के साथ युद्ध कर रही है, ठीक है, तो उस कंट्री का जो नागरिक होगा वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? एलियन एनिमी.
Fourth point, in a case where a minor enters into an agreement for the purchase of necessaries, then minor is personally liable to pay, minor's estate is liable to pay, minor's guardians are liable to pay, none of these, as minor's agreement is void. The answer is beta, minor's estate is liable to pay for the necessaries purchased by the minor. Next question. Persons of unsound mind are competent to contract, not competent to contract, discouraged by the law not to enter into contract, required to enter into contract with the permission of court. What would be your answer? Chaitanya Goyal is asking, sir, what is estate? Estate means you can say the properties. His properties, own properties are called estate. The answer is B. Person of unsound mind are not competent to contract. Next. A lunatic can enter into a valid contract at any time only with the court permission if the other party has no objection, only during lucid interval. Lucid interval means बच्चे ये हुआ कि जिस समय वो lucid नहीं है, lucid मतलब lunatic नहीं है. The answer is D, only during the lucid interval. Next. A minor can be appointed as an agent, cannot be appointed as an agent, can appoint others as his agent, none of these. The answer is a minor can be appointed as an agent. Next. A convict who is sentenced for imprisonment cannot enter into contract throughout his life, cannot enter into contract during the period of imprisonment, can enter into a valid contract even during the imprisonment, can enter into only a contract of marriage. The answer is B. A convict who is sentenced for imprisonment cannot enter into contract during the period of imprisonment. Next. A contract is valid, void ab initio, void or voidable if it is beneficial to the minor. बच्चों, the answer is a contract is valid if it is beneficial to the minor.
right? यश इज आस्किंग सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्विक्ट. कन्विक्ट मतलब अपराधी बेटा, जो सजा, जिसको सजा मिली हुई है. Which of the following persons are disqualified by law from entering into a valid contract? Alien enemy, insolvent, convicts, all of these. The answer is D, all of these. So this was the test, a query in question number 4. I'm just taking beta. In case of necessaries, माइनस की जो प्रॉपर्टी है वो लायबल होती है. राइट आंसर इज बी. ओके ओके. Sadhana saying, sir, all my answer correct. I am very much satisfied. Okay, Sadhana, congratulations, beta. Soumya Ranjan got 10 on 10. Shruti Pathak 9. Ashwa is saying, sir, all my answer correct. Okay, so congratulations all of you who have got all the correct answers. तो स्टार्ट करते हैं बच्चों. मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आज के क्लास के लिए. ठीक है, 1 मिनट के लिए पॉज ले रहा हूं बच्चों. Okay, Kashish, Tarun, all of you got 10 on 10. वाह, गुड, बहुत अच्छी बात है. सभी लोगों के नाम दिख रहे हैं मुझे, और सब लोगों, मैक्सिमम लोगों के 10 on 10 है. कुछ लोगों के 9 है. तो जिनके 9 है उन्हें इंप्रूवमेंट करना है बच्चों. कहाँ गलती है वो देखना है एक बार. Manish is asking, sir, if convicts are disqualified, then how can he make a contract after completion of imprisonment? देखो बच्चे, Manish is saying, sir, if कन्विक्ट है तो हाउ कैन कॉन्ट्रैक्ट. बेटा देख, कन्विक्ट है, उसको सजा मिल गई. सजा मिलने के बाद वो बरी हो गया ना. जो उसका गलती की उसको तो पनिशमेंट मिल गया, तो उसके बाद वो नॉर्मल पर्सन हो गया. ठीक है ना. Sarthak is saying, sir, the way you teach made me answer every question correctly. Thank you, beta, but it's your own hard work. ठीक है, अब आगे चलते हैं. आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्ट ऑफ द यूनिट 3. तो स्टार्ट करेंगे बच्चों फ्रॉड से. वी हैव डिस्कस इन दिस पार्ट पोर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस. नाउ वी विल डिस्कस फ्रॉड सेक्शन 17. फ्रॉड सेक्शन 17. फ्रॉड, देखिए, जनरली फ्रॉड का मतलब होता है धोखा देना, किसी को धोखा देना. ठीक है. अब व्हाट द लॉ सेज अबाउट फ्रॉड. सी, फ्रॉड मींस एंड इंक्लूड्स any of the following acts committed by a party to a contract or by his agent with intent to deceive or induce a person to enter into a contract. सेक्शन 17 कहता है कि कुछ चीजें हैं जो फ्रॉड में आती हैं. ये अगर पार्टी ने किया, कमिट किया है, या उसके एजेंट ने किया है. पार्टी ने किया है या उसके एजेंट ने किया है, इंटेंट टू डिसीव, धोखा देने की इच्छा से, धोखा देने के उद्देश्य से. और टू इंड्यूस ए पर्सन, इंड्यूस मीन्स फुसलाना, किसी पर्सन को फुसलाने के लिए ताकि वो कॉन्टेक्ट में आ जाए. तो डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड सेज, फ्रॉड मीन्स एनी एक्ट which is committed by even party or even the agent with the purpose to deceive,
is called fraud. Right? What are that acts? See one by one. First is the suggestion that a fact is true when it is not true and the person making the suggestion does not believe it to be true. क्या मतलब? Suggestion means statement. To give a statement that a fact, something is true, but actually it is not true, and the person who is making the statement knows that the statement is not. यानी कि जानबूझ के झूठ बोलना, knowingly making a false statement, कि जो आदमी स्टेटमेंट दे रहा है कह रहा है ये बात सच है जबकि वो बात झूठ है, और जो बता रहा है उसे पता है कि झूठ है, यानी कि वो झूठ बोल रहा है, जानबूझ के झूठ बोलना इज कॉल्ड फ्रॉड. क्लियर? डिसीव. डिसीव मीन्स बच्चे, आई टोल्ड यू, डिसीव मीन्स इज धोखा देना. ठीक है? सी द एग्जाम्पल. A sells his watch to B by saying that the watch is made in Japan, but actually the watch is Indian, and the fact is known to A, hence A made a fraud. Okay, A ने B को घड़ी बेची ये कह के कि ये मेड इन जापान है, जबकि वो क्या थी? इंडियन. और ये बात A को पता थी, इसका मतलब A ने फ्रॉड किया है. क्लियर बच्चे? Second point, active concealment of the fact by a person having knowledge or belief of the fact. मतलब जानबूझ के कोई बात छिपाना. पहला स्टेटमेंट था मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट, knowingly making false statement. Second point, knowingly making the concealment, hiding. जानबूझ के कोई बात छिपाना क्या कहलाएगा बच्चे? एक्टिव कंसीलमेंट. फ्रॉड कहलाएगा ये, फ्रॉड का धोखा देना कहलाएगा. एग्जाम्पल नंबर 14. X sells a horse to Y. Horse is blind and X knows the fact. When Y asks, is the horse blind? X clearly says no. Here it is a fraud. Right? Third point, a promise made without any intention of performing it. A promise made without any intention of performing. यानी कि आप प्रॉमिस तो कर रहे हैं लेकिन आपका कोई इरादा नहीं है कि इसे पूरा करना है. It is called fraud. is the example. And fourth point, any other act fitted to deceive. कोई और काम करना जिसका पर्पस ही धोखा देना हो. A agrees to double B's gold by magic and runs away with his gold. It is a fraud. So what are the 4 points? False statement, false concealment, promise without intention to perform, any other act to deceive. Rahul is asking, sir, concealment का मतलब क्या होता है? Concealment का मतलब होता है बेटे बात को छिपाना. ठीक है? छिपाने को बोलते हैं conceal करना. And fifth point, any such act or omission as law specifically declared to be fraudulent. इसका मतलब ये 4 तो हो ही गए, बट कोई और ऐसा एक्ट है सब कुछ सही है, इन 4 में नहीं आता, लेकिन लॉ ने कहा हुआ है भैया ये तो फ्रॉड माना जाएगा ये काम करना, तो इट इज फ्रॉड. तो 5 पॉइंट्स: false statement, false concealment, promise without intention to perform, other act fitted to other act for purpose of deceive, any act or omission which the law says it is fraudulent. ठीक है? पहले में गलत बोलना, सेकंड में गलत बात को छिपाना, सही बात को छिपाना, तीसरे में प्रॉमिस करना जो पूरा नहीं करोगे आप, चौथा कोई और काम जिससे धोखा देने के उद्देश्य से किया गया हो, और पांचवा कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन जैसे लॉ ने स्पेसिफिकली कहा हो ये फ्रॉड माना. राइट? नाउ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पे केस लॉ बन सकता है. दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर केस स्टडी इन योर एग्जाम. ठीक है? फर्स्ट, देयर मस्ट बी अ रिप्रेजेंटेशन और असर्शन. You can say the meaning of representation or assertion means statement, and it must be false. Mere silence
as to the fact is not fraud. कोई स्टेटमेंट दिया जाए और स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, वो झूठ होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। चुप रहना कभी भी नॉर्मली फ्रॉड नहीं होता है। चुप रहना नॉर्मली फ्रॉड नहीं होता है। मेरे बच्चों छोटे छोटे मीनिंग चलो बताता हूं मैं। आशुतोष सिंह सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसीव? डिसीव पता चुका बेटे, धोखा देना। ओमिशन, हाइड करना, नहीं करना, छिपाना। फ्रॉडोलेंट मींस जिसका पर्पस फ्रॉड करने का। ठीक है बेटा। एग्जाम्पल नंबर 16, X sells by auction to Y a horse which X knows to be unsound. X says nothing to Y about the horse unsoundness. This is not fraud by X. यहां बड़ा इंपॉर्टेंट बात। लॉ कहता है चुप रहना कभी भी फ्रॉड नहीं होगा। चुप रहना कब फ्रॉड होता है वो अपन देखते हैं इस एग्जाम्पल में। वापस आएंगे यहां पर पीजी स्लाइड पर। Silence normally not fraud, but it is fraud where it is the duty to speak. आपको बताना चाहिए था, आपने नहीं बताया। ड्यूटी थी आपकी सच बताने की, लेकिन आप चुप रहे। इट इज फ्रॉड। एग्जाम्पल 17, X sells by auction to Y a horse which X knows to be unsound. Y is X's daughter. Here the relation between the parties would make it X duty to tell Y if the horse is unsound. X ने ऑक्शन से Y को एक घोड़ा बेचा और Y कौन है? X की डॉटर। तो यहाँ रिलेशन ऐसा है कि X की ड्यूटी थी Y को बताना कि हॉर्स क्या है, वो अनसाउंड है। एंड इन दिस केस it is a fraud by X. Where silence is speech, where Y says to X, if you do not deny it, it shall assume that the horse is sound. X says nothing. Here X silence is equal to speech. तो अब आते हैं लॉ स्टेटमेंट। देखिए पहली चीज, देयर मस्ट बी अ स्टेटमेंट एंड दैट मस्ट बी फॉल्स। ये बात क्लियर हो गई, कोई स्टेटमेंट हो जो झूठ होना चाहिए। दूसरी बात लॉ ने क्या कहा, साइलेंस is not a fraud, only in 2 cases it is fraud. साइलेंस नॉर्मली फ्रॉड नहीं होता है, लेकिन 2 केस में साइलेंस फ्रॉड माना जाएगा। पहला, where it is the duty to speak, जहां आपकी ड्यूटी बनती, जैसे कि X ने, जो एग्जांपल लिया हमने, X ने Y को एक घोड़ा बेचा, Y X की डॉटर है, तो यहाँ ड्यूटी बनती थी X की बताना कि भाई आप कि ये घोड़ा अनसाउंड है। दूसरा, वेयर साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच, जैसे कि एग्जांपल में 18 में वाई ने एक्स से पूछा, अगर तुमने मना नहीं किया तो मैं ये मालूम है घोड़ा सही है, साउंड है। एक्स ने कुछ कहा ही नहीं, शांत रहा। नाउ इट इज साइलेंस इक्वल टू स्पीच। अब एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, सर अगर कोई रिलेशन ना हो, देखिए रिलेशन किस तरह का है, यहाँ पर ड्यूटी है नहीं है, दैट इज डिसाइडेड बाय द कोर्ट। ये सब इस तरह का है, बट लॉ गिवन दिस अपने प्रोविजंस की, भैया जहां पर ड्यूटी है बताने की, यहाँ साइलेंस इक्वल टू स्पीच है, वहां पर साइलेंस फ्रॉड माना जाएगा, अदरवाइज फ्रॉड नहीं माना जाएगा। लेट्स सी एन एग्जांपल। मैं एक एग्जांपल की बात करता हूं आपसे, मैं आपसे एक एग्जांपल की बात करता हूं। मान लीजिए मैं एक स्टोर में जाता हूं, ठीक है, और मैं एक स्टोर में जाता हूं, वहां से जो एक सेल्समैन था उससे कहता हूं, भाई मुझे है ना एक कह सकते हैं पेन चाहिए, पेन होता है बर्तन, एल्युमिनियम पेन चाहिए मुझे, राइट। तो वो इशारा करता है मुझे, सेल्समैन साहब देखिए वहां रखे हैं, वहां पे देख लीजिए, वहां पर रखे हैं, ठीक है। सेल्समैन खड़ा है, मैं जाता हूँ, वहां पर क्या हुआ कि एल्युमिनियम पेन के साथ कुछ कॉपर पेन भी रखे थे, या यू कैन से द स्टील पेन और ऑल्सो प्लेस देयर, कुछ स्टील के पेन रखे थे। मैंने स्टील पेन सेलेक्ट कर लिया गलती से, ये गलती मुझसे हुई। सेल्समैन देख रहा था, लेकिन उसने मुझे टोका नहीं कि सर आपने गलत पेन चूज कर लिया है। तो क्या ये फ्रॉड माना जाएगा? लॉ सेज नो, बिकॉज मैंने उसको नहीं कहा था कि मुझे आप ला के दे दो, सेल्समैन को नहीं बोला था कि आप मुझे एल्युमिनियम पेन ला के दे दो, मैंने तो खुद से जाके देखा। अगर वो साइलेंट खड़ा है तो इट इज नॉट अ, क्लियर इतनी बात।
See, in this case, example number 16, X sells by auction to Y a horse which X knows to be unsound. X says nothing. तो सवाल ये होता है क्या अनसाउंड हॉर्स को बेचना फ्रॉड है? आंसर इज नो. हो सकता है उसे इसका, क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया. इसको एक तरीके से और लेते हैं बच्चों पर, कि एक बाइक है जिसकी ब्रेक फेल हो गई, उसे ब्रेक नहीं है उसमें, उसे बेचना क्या फ्रॉड है? अभी कुछ लोग कहेंगे यस फ्रॉड है, लेकिन जो बाइक को कबाड़े में बेच रहा है तो ठीक है. तो लॉ को अगर हम फॉलो करें तो लॉ ने कहा भाई साइलेंस सिर्फ दो जगह, साइलेंस इज ओनली टू प्लेसेस इट इज इक्वल टू फ्रॉड, व्हेन ड्यूटी टू स्पीक, व्हेन साइलेंस इक्वल टू स्पीच. तो प्लीज रीड दिस स्लाइड केयरफुली, देन विल गो फर्दर. तू बिटिया तेरा समझ नहीं आया मुझे, एक बार तूने यस बोला, एक बार नो बोला. चैतन्य बेटे अब क्लियर हो गया आपको पॉइंट? आगे बढ़ते हैं. द रिप्रेजेंटेशन और असर्शन मस्ट बी अ फैक्ट. कोई वास्तविक बात होनी चाहिए, फैक्ट, वास्तविकता होनी चाहिए, वास्तविकता होनी चाहिए, राइट. mere opinion, mere expectation is not a fraud. X who is about to sell goods says the cost him rupees 5,000. The statement is fact, but if says the goods are worth rupees 5,000, it is a statement of opinion. X एक गुड्स बेच रहा है, कहता है सर ये फॉर एग्जांपल ये गुड्स बेच रहा है और कहता है सर इसकी कीमत 5,000 रुपए है, ये फैक्ट. वो कहता है इसकी कीमत मेरे हिसाब से 5,000 की होगी. This is not fact, this is just an opinion. X says this goods is cost 5,000, its price is 5,000, it is fact. But he says it would be worth of about 5,000, it will be worth of 5,000, it is not fact, it is just an opinion. Okay? The representation must have been made with the knowledge of the falsity or without belief in its truth. Clear है ये बात तो, कि जो स्टेटमेंट दे रहा है, who the person who is making the statement has the knowledge the statement is false. Ritu is asking, sir, to sell the defective bike is not a fraud. Depend करता है ना बच्चे, डिपेंड करता है कि वो बाइक कहाँ बेची जा रही है. अगर कबाड़े में बेची जा रही है तो फ्रॉड नहीं है, अगर शोरूम से लेके आ रहे हो तो ब्रेक नहीं है तो वो फ्रॉड है. ठीक है ना, डिपेंड करता है सिचुएशन. Fourth point, the other party must have been induced, फुसला गई हो, बातों में आ गई हो, to act upon the statement. जिस पार्टी के साथ हमने फ्रॉड किया, जिसको धोखा देने के हमने धोखा दिया, वो धोखा हो गया, उसे धोखे में आ गई. अगर हमने धोखा देने की कोशिश करी, वो धोखे में ही नहीं आया, तो फ्रॉड कैसे होगा? We are trying to deceive, but he is not getting deceived. Then there is no fraud, right? A bought shares in a company on the faith of a prospectus which contained an untrue statement that B was a director of the company. A had never heard of B, and therefore the statement was immaterial from the point of view. From his point of view, A's claim for damages in this case was dismissed because the untrue statement had not induced A to buy the share. So please understand the example in detail. I'm just discussing with you. What actually happened? A bought shares in some companies. Let's say the company is XYZ company. Okay? The prospectus of the company contains a false statement that Mr. Let's say Mr. Chaitanya. Mr. Chaitanya was the director of the company. ठीक है, अब ए तो जानते ही नहीं चैतन्य कौन है. It does not know about Chaitanya. And after buying the share, he claims that he has purchased the shares on the faith that Mr. Chaitanya is the director. So there is a fraud with me.
एंड आई विल वांट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। भाई ए ने शेयर खरीदे एबीसी कंपनी के, और एबीसी कंपनी के प्रॉस्पेक्टस में ये लिखा हुआ था, क्या लिखा था बच्चों, कि मिस्टर चैतन्य डायरेक्टर हैं कंपनी में। अब मिस्टर चैतन्य को ये जानता ही नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें कहा भाई साहब मैं तो इसी विश्वास पे शेयर खरीद लिए, और अब ये शेयर खरीद लिए, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, और शेयर मुझे वापस करो, शेयर वापस ले लो, मुझे पैसे दो। कोर्ट ने पूछा अच्छा ये बताओ आप, क्या आप जानते हो चैतन्य को? इन्हें कहा नहीं, आई डिडंट नो द चैतन्य। तो फिर जब जिस आदमी को आप जानते ही नहीं हो, तो उसके विश्वास पर, उसके फेथ पर आप शेयर कैसे खरीद सकते हो? यानी ये आपकी बात बिल्कुल बेकार है। आप इसको, आप जो धोखा दिया गया आपको, उससे आप बातों में आए ही नहीं है, आपने अपनी मर्जी शेयर की। क्लियर इतनी बात? अब क्लियर है कि जिस आदमी को धोखा दिया जा रहा है वो धोखे में आना चाहिए, अगर धोखा ही नहीं हुआ उसे तो वो फ्रॉड नहीं माना जाए। चैतन्य सिंह, सर अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम है और कोई उसका प्राइस ज्यादा करके बेच दे तो वो फ्रॉड कंसीडर होगा? चैतन्य मेरे ख्याल से आप अपने एग्जांपल थोड़ा और क्लियर करो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हो आप, प्लीज बेटा एक बार। मनीष इज सेइंग a person tries to find defect in the bike and then it is a fraud if it did not try to find defects in the bike, then it is not fraud। एक मिनट मैं समझ लूं दोबारा प्रॉब्लम बेटा आपकी जरा। A person tries to find defect in the bike, then it is fraud if a did not try। नहीं मैं समझ नहीं पा रहा बेटा, मैं मनीष और चैतन्य दोनों ही आपके क्वेश्चन समझ पाया हूँ, प्लीज एक बार दोबारा मुझे क्लियरली लिख के दो, मैं लेता हूं प्रॉब्लम आपकी। नेक्स्ट पॉइंट, द अदर पार्टी मस्ट हैव बीन रिलाइड अपॉन द रिप्रेजेंटेशन एंड मस्ट हैव बीन। सिंपल सा फंडा है कि दूसरे सामने वाली पार्टी ने आपकी धोखाधड़ी वाली बातों को मैं विश्वास कर लिया। मान लीजिए सामने वाला को धोखा देने जा रहा है मुझे, और मैं उसकी बातों में ही नहीं आ रहा हूं और ना मुझे धोखा हुआ, तो फिर मैं क्लेम क्या करूंगा? राइट? सीधा एग्जांपल, T bought a cannon means तोप, from H on credit में उधार खरीदी। The cannon was defective but H had plugged it। He did not examine the cannon but when he used it, it burst। Held as the plug had not deceived T, he was not liable to pay। He was liable to pay। See what is the example? श्रुति इज सेइंग सर अगर कोई पर्सन खुद से पूछ रहा है और शॉपकीपर नहीं बता रहा है तो फ्रॉड। क्लियर थी बात? एग्जाम्पल क्या कहता है, मिस्टर टी ने एक तोप खरीदी एच से उधार। अब तोप किस लिए खरीद रहा है? हो सकता है किसी लड़ाई बजाना हो, या हो सकता है उसे घर के बाहर ऐसे क्या कहते हैं, कुछ लोग लगाते हैं घर के बाहर तोप लगा देते हैं, इस तरह खरीद रहा हो। उसने पर्पस बताया ही नहीं कि मुझे तोप किस लिए चाहिए। राइट? टी बॉट ए कैनन, टी ने एक तोप खरीदी और उसने बताया नहीं पर्पस क्या है, लेकिन तोप में जब आग लगाई बारूद डाल के आग लगाई तो तोप फट गई क्योंकि डिफेक्टिव थी। अब टी ने कहा भाई साहब मैं तो पैसे दूंगा नहीं। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि तोप तो डिफेक्टिव थी, नुकसान हो गया मेरा। लॉ ने कहा नो, कोर्ट ने कहा नो, यू डिडंट हैव मेड द पर्पस। आपने पर्पस तो बताया ही नहीं था किस लिए चाहिए आपको। दुकानदार साइलेंट था, तो आपके साथ धोखा कहां हुआ? धोखा जब होता जब आप पर्पस जाते एच से कहते कि भैया मैं तो तोप खरीद रहा हूं, मुझे तो लड़ाई करनी है, गोले फेंकने पड़ोसी घर पर, पड़ोसी घर उड़ाना है, उसके बावजूद तो बस्ट हो जाती, देन इट इज फ्रॉड। क्लियर इतनी बात? चलिए अब बच्चों के आ रहे क्वेश्चन। चैतन्य क्वेश्चन आ गया, सर अगर कोई दुकानदार किसी गुड को बहुत हाई प्राइस में बेच रहा है जबकि उनकी वैल्यू कम है एंड ही नो दैट कि वो ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है, तो ये फ्रॉड कंसीडर होगा? लेट्स से चैतन्य कहना यह है कि अगर कोई सपोज ये मेरा चश्मे का वो है कवर, ठीक है, इसकी कीमत 50 रुपए है और कोई आदमी 500 में बेच रहा है, 1000 में बेच रहा है, तो इसकी मर्जी, आप मत खरीदो। भाई जो चीज बेच रहा है उसका प्राइस उसे डिसाइड करना है, लेकिन वो धोखा देके बेच रहा है, यानी वो कह रहा है ये तो इम्पोर्टेड है,
इसलिए महंगा है, तो ये फ्रॉड, राइट। प्रमोद जी कह रहे हैं वी वांट मोर एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश, वी आर फ्रॉम साउथ। ओके, ठीक है बेटा, आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ 21 अगेन, ठीक है। See, in the what we have discussed, first thing about fraud, there must be a false statement, intention to deceive someone else, and this, and to whom the statement is made, he must be deceived, he must have relied on the statement. Example number 21. In example number 21, T bought a cannon. Cannon means the large gun. I have made the picture. From H on credit. Credit means payment will be made in future. Okay? And the cannon was defective. Defective, and H had plugged it. Plug means gun, filling the gunpowder. In this example, T did not tell the purpose of cannon to Mr. H. Now, in that case, the cannon was defective, and when he plugged the fire on the cannon, it was burst. So that was the reason, because whether Mr. T can claim, the answer is no, because there was no fraud with Mr. T. And T, because the price has not been paid by the T, so T has to make the payment because the gun was purchased on credit, right? आगे बढ़ते हैं। Lalit is asking, when I buy a new car and it has some technical issue, is it fraud as showroom didn't allow us to drive before delivery? Yes, you can say it is fraud. What is induce? Induce I have told you beta, induce मतलब होता है फुसलाना, बातों में लेके आना. And last important point, there must be loss. Someone making the false statement, intention to deceive, we are deceived by his statement, but there is no loss to us. Then what we can claim? Nothing. जब कोई मुझे धोखा देना चाह रहा है, उसके बावजूद धोखा भी हुआ, लेकिन मुझे कोई लॉस नहीं हुआ. जब मुझे लॉस ही नहीं हुआ तो मैं क्लेम क्या करूंगा? ठीक है, तो फ्रॉड नहीं माना जाएगा. Consequences of fraud: a contract induced by fraud is voidable. Voidable means which can be void at the option of the party who is defrauded. And until it is avoided, it is a valid. Until it is avoided, it is valid, and party can claim. Party has the option. He can resign the contract. Resign means cancel the contract. He can insist for genuine performance, and he can sue for damages compensation. पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है, जो जेन्युइन परफॉर्मेंस होता उसको डिमांड कर सकती है, और अगर कोई लॉस हुआ तो क्या कर सकती है? कॉम्पनसेशन क्लेम करेगी लॉस की वैल्यू के बराबर. ठीक है. मनमोहन is asking, sir, he must died after busting cannon. Harsh, I'm not getting what you want to ask. Who are connivance? I'm not understanding what you want to ask, better. Sir, if the defect is unable to see and the shopkeeper does not mention the defect, then it is fraud. Normal case, it is not. Sir, what do you mean by resign? Resign means beta cancel karna.
एक सेकंड, आपकी प्रॉब्लम देख रहा हूँ बच्चे। श्रुति सर, पेन वाले एग्जाम्पल में शॉपकीपर को पता था कि पेन स्टील का है तो भी उसने नहीं बताया, तो ये फ्रॉड होगा? नहीं बेटा, फ्रॉड नहीं होगा, बिकॉज हो सकता है मेरा मन चेंज हो गया, मैंने कुछ डिस्कस थोड़ी किया शॉपकीपर से, मेरा मन चेंज हो गया, मुझे स्टील वाला अच्छा लगा हो। ठीक है, ओके। कन्वीवेंस का मतलब होता है बेटे मिली भगत, आपस में मिलजुल कर फ्रॉड करना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे केस लॉ बन सकता है। कॉन्ट्रैक्ट नॉट नेसेसरली वॉइडेबल, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो वॉइडेबल नहीं होंगे। फ्रॉड है लेकिन वॉइडेबल नहीं है। कौन कौन से? सी, where the consent of a party to contract was caused by silence amounting to fraud and the party could discover the truth by ordinary diligence। अगर कोई पार्टी अपना थोड़ी सी बुद्धि लगा के वो पता लगा लेती फ्रॉड है, तो वो फ्रॉड नहीं हुआ। सी एग्जाम्पल, लेट्स से आई वांट टू परचेज आई वांट टू परचेज अ ब्लू पेन, ब्लू इंक पेन। ठीक है, I went to the shopkeeper, I demanded the blue pen and he has given me the black pen। Actually the pen is like that कि full body is either blue or black to find which color ink is in the pen, right? I am demanding blue pen, he is giving me the black pen and saying it is blue sir, blue, but I could find by my ordinary diligence that it is not a blue pen, it is black pen, and it is not। मैंने दुकानदार से कहा भैया मुझे एक ब्लू पेन दे दे, मुझे काम करना है। दुकानदार ने ब्लैक पेन दिया, सर ये ब्लू ही है। तब भी मैं नहीं चेक कर रहा हूँ, या मैं देख रहा है मुझे कि ब्लैक है वो, देन इट इज नॉट अ फ्रॉड। दूसरा, वेयर द थर्ड पार्टी हैज एक्वायर्ड एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी फॉर वैल्यू, मींस सपोज आई हैव मेड अ फ्रॉड with someone else and purchase this green pen। ठीक है, before the person with whom the fraud was done take the decision to go to the court, filing the suit against me, I have just sell the pen to third person। Now it is not as per the law। मैंने पेन खरीद लिया धोखा दे किसी को, और जिसको धोखा दिया जब तक वो डिसीजन लेता उससे पहले ये पेन मैंने किसी और को, किसी पर्सन को बेच दिया, थर्ड पार्टी को बेच दिया। अब मैं क्लेम नहीं कर सकता, तब वो पर्सन मुझसे क्लेम नहीं कर सकता पेन, क्योंकि जिसको मैंने बेच दिया वो तो ओनर हो गया, राइट? Where the party after becoming aware of the misrepresentation of fraud takes a benefit under the contract or in some other way affirms it। It means if someone has made the fraud on me and I know the fact, whenever I knew the fact, and even that I take the benefit। For example, I purchase a shirt and there is some hole in the sleeves, the shirt is defective। ठीक है, तो देयर इज फ्रॉड फ्रॉम द शॉपकीपर। आई हैव नोटिस, जब मैं घर पे आया उसको लेके आया, नोटिस दैट इट इज डिफेक्टिव, इवन दैट आई जस्ट वेयर इट एंड गेट इन द पार्टी, so it is then in that case I cannot deny the contract। मैंने एक शर्ट खरीदी, शर्ट की स्लीव में कहीं छेद हो रहा था, डिफेक्टिव हो गई, यानी इसका मतलब क्या हुआ, दुकानदार में फ्रॉड किया, दुकानदार ने मुझे डिफेक्टिव चीज बेच दी। क्योंकि अगर मैं कोई एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दुकानदार से कि भैया कोई शोरूम है वहां से मैं कोई शर्ट खरीद रहा हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो सही चीज मुझे बेचे। मैंने घर आके चेक किया तो शर्ट में क्या था, होल था, डिफेक्टिव थी। मैंने वापस करने की बजाय मैंने उसको पहन लिया और पार्टी में चला गया, मैंने कहा अब बाद में बदल दूंगा। अब उसको अगर मैंने बेनिफिट ले लिया तो मैं उसको वापस नहीं कर सकता। ठीक है बच्चे, क्लियर?
सर इन व्हाट सेक्शन इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फ्रॉड? सेम सेक्शन 17 में मेंशन है, आप इसको अभी 17 लेके चलिए। श्रुति क्लियर हो गया बेटा? ओके। फरहीन ताज सर, द वे यू आर टीचिंग इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग, थैंक यू बेटा। एक्सप्लेनेशन पॉइंट नंबर 2 once more। देखिए मैं कह रहा हूं कि अगर फ्रॉड हुआ और उसके बाद, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिया, पेन का एग्जाम्पल लिया था मैंने कि ये पेन मैंने फ्रॉड से खरीदा, धोखा दे किसी से खरीद लिया, जब तक वो इसका कोई मुझे रिजाइन करता या मुझे सूट फाइल करता, उससे पहले ही मैंने ये पेन किसी और को बेच दिया, जेन्युइन पर्सन को बेच दिया, तो वो पर्सन अब मुझसे ये पेन क्लेम नहीं कर, राइट? ओके, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज लर्न कर लेना इन तीनों पॉइंट को। नेक्स्ट, मिसरिप्रेजेंटेशन। देखिए मिसरिप्रेजेंटेशन यू कैन से is a wrong statement, concealment, but innocent. Fraud, knowingly making the false statement. Misrepresentation, making the statement false but innocently. इसका मतलब जो झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, उसे पता ही नहीं है तो गलत बोल रहा है, उसे लगता है मैं सच बोल, यानी वो गलती से झूठ बोल रहा है। According to section 18, there is misrepresentation when a person positively states that a fact is true when the information does not warrant it to be so. Means एक पर्सन स्टेटमेंट देता है कि वो फैक्ट ट्रू है, लेकिन एक्चुअली वो ट्रू नहीं है। X says Y that bike is run 70 kilometers per liter. X believes that he is true, but actually bike runs only 40 kilometers per liter. Here it is a misrepresentation. When there is breach of duty by a person without any intention to deceive. Breach of duty means जो ड्यूटी थी उसकी उसे पूरा नहीं करा, लेकिन उसका धोखा देने का उद्देश्य नहीं था, then it is called misrepresentation, not fraud. अगर कोई आदमी, if a person making the false statement but he has not any intention to deceive, then it is not fraud, it is misrepresentation, section 18. ठीक है? While taking a life insurance policy, X states that his age is 25 years, believing it to be true. Actually, he is 30 years old. X is the guilty of misrepresentation. X ने लाइफ पॉलिसी में लिखा वो 25 साल का, पर एक्चुअल में 30 साल का था, लेकिन X को यही लगता था कि वो 25 साल का ही है, तो इट इज अ मिसरिप्रेजेंटेशन, नॉट द फ्रॉड। Ritu is saying, sir, if I don't tell the shopkeeper that I have taken his benefit and go to the return the shirt, ठीक है, अगर आप इसको ये प्रूव आपको करना पड़ेगा, दुकानदार को पता लग जाएगा आपने शर्ट पहनी है नहीं पहनी है, यार ये तो नॉर्मल सी बात है, शर्ट पहनना और नहीं पहनना तो अंतर तो लगता ही है, शर्ट की पोजीशन चेंज हो जाती है, ठीक है ना? When a party causes the other party to agreement make a mistake as to the subject, सिंपल वही बात है, अदर दूसरी पार्टी को हम गलत काम के लिए कहते हैं, बट अनइंटेंशनल। वन पार्टी इंड्यूस अदर टू वर्क, बट द पार्टी मेकिंग द स्टेटमेंट ही इज इनोसेंट। What are the consequences? Same consequences as that of fraud, except number 3. 3 says, three consequence of the fraud is the party can claim the damages, but not in the case of misrepresentation. See, the aggrieved party in case of misrepresentation by other party can avoid or resign the contract, means cancel the contract or accept the contract, but insist that he shall be placed in the position in which he would have been if the representation made had been true. यानी कि या तो वो कैंसिल करेगा या वो रिक्वेस्ट करेगा कि भैया जो जेन्युइन तरीका होता है उसमें इसको कन्वर्ट।
तो द डिफरेंस से पॉइंट नंबर 1 को एक्सप्लेन कर दीजिए बेटा, अभी देखते हैं, है ना। पॉइंट नंबर 1 था कि फॉल्स स्टेटमेंट, देखिए विदाउट एनी इंटेंशन, ए फॉल्स स्टेटमेंट बट विदाउट एनी इंटेंशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। डिफरेंसेस आप लोग प्लीज पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी है, आपने जो पढ़ा उसी वही चीजें हैं। मिस्टेक सेक्शन नंबर 20 से लेकर 22 तक। मिस्टेक मीन्स एरनस बिलीफ अबाउट समथिंग, गलती होना। तो मिस्टेक आर ऑफ टू टाइप्स, मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। Mistake of law are of two types, mistake of law of country, mistake of law of foreign country. Mistake of fact are again two types of mistake, mistake of bilateral mistake means both the parties under mistake, unilateral mistake, one party is under mistake. C. Mistake of law. A person cannot be allowed to get any relief on the ground that it had done a particular act in ignorance of law. मतलब ये हुआ कि एक आदमी जो ये कहे मुझे अपने देश के कानून की जानकारी नहीं है, मुझे गलती से हो गया, इट इज नॉट अलाउड, इट इज नॉट अलाउड। A and B enter into a contract on the another's belief that a particular debt is barred by limitation. The contract is not. One more example, easy example. If we go to the easy example, let's say an Indian says in India the traffic is on left side. You know everyone. Ab one person says running the car on the right side, and after the catching by police, he says that I have no knowledge about the law. I thinking we have to drive in the right side. It is not. He will be fined. Clear? But in case of law of foreign country, suppose a foreigner says that he has no idea about the India, he comes first time in India, and in his country the driving is of right side, he can be allowed. ठीक है? So mistake of law foreign country, such a mistake is treated as mistake of fact and the agreement is clear. इतनी बात बच्चे कि अगर इंडिया का आदमी है तो ये माना जाता है कि इसे इंडियन कानून की जानकारी है और उसको फॉलो करना पड़ेगा, बच नहीं सकता। लेकिन अगर फॉरेन कंट्री का या फॉरेन लॉ की गलती है तो उसे बेनिफिट दिया जा सकता है। बाइलैटरल मिस्टेक, जब दोनों ही पार्टी when both the parties under mistake, agreement is void. For example, A and B enters into an agreement. Listen, A and B enters into an agreement in which A will let his flat, his house to be on rent after 1 month. Okay. When they are making the agreement at some other place, the house was destroyed by earthquake. Both the parties are unaware of the fact. The contract is void. A और B कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें A B को अपना घर किराए पे देगा और 1 महीने बाद एग्रीमेंट वो करते हैं किसी और जगह पर, घर से दूर। उन्हें पता नहीं है कि जिस वक्त वो एग्रीमेंट कर रहे थे उस वक्त वो भूकंप से वो घर गिर गया। अब जब घर ही गिर गया, दोनों को ही नहीं पता है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बच्चे, इसमें वॉइड हो जाएगा। Bilateral mistakes may be of existence, may be of identity, may be of quality, may be of quantity, may be of title means ownership, may be of possibility of performance. Then contract is void. But law says if only one person under the mistake, contract is not void. It is valid. अगर केवल एक आदमी गलती में है तो contract void नहीं माना जाए। For example, let's say I have entered into contract with Mr. X to purchase a 50 kg wheat, thinking it is of MP, but actually it is of Punjab. Shopkeeper knows it is of Punjab, but I am in mistake. I am just expecting it is of MP, Madhya Pradesh ka गेहूं. Then it is only one-sided mistake and I have to make the payment of the wheat. मैंने एक दुकानदार से कॉन्टेक्ट किया कि मुझसे 50 किलो गेहूं खरीदूंगा। मेरे दिमाग में चल रहा है यार ये तो शायद एमपी का गेहूं है,
बट एक्चुअल में ये पंजाब का था। तो गलती से मेरी अकेले की थी, एक पार्टी की थी, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकता, मुझे इसका पेमेंट करना ही पड़ेगा। इतनी बात। So this was the summary of second part। सुपर ओवर 3 का टाइम हो गया बच्चों। एक क्वेरी है आप लोगों की, अगर मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ हो तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा या नहीं होगा? बेटे अगर इंडियन लॉ का मिस्टेक होगी, कॉन्ट्रैक्ट परफेक्टली वैलिड। ठीक है, चले आगे बढ़े बच्चों। ब्रेक का टाइम हो रहा है, फिर आप लोग ब्रेक मांगोगे, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अ प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन of performing it amounts to misrepresentation, fraud, coercion, none of these. Next question, which of the following is not included in term fraud? Concealment of fact in good faith, when the court declares it fraudulent, when it is made with intention to deceive, promise made without intention to perform। छांटो भैया कौन सा सही है इसमें, जिसमें जो फ्रॉड नहीं है। अरे मेरे लाला आंसर एक एक करके मत भेजो, एक बार में भेजना सारे। A false statement of fact made without intention to deceive the other party falls under the category of अब देखो मैं दवाई देता हूं जिससे क्वेश्चन सारे एक बार में आएंगे, करके कोई नहीं भेजेगा। दवाई ये है, जिसने भी एक बार में नहीं भेजा, सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं भेजे, एक करके भेजे, उसका एक नंबर कम हो जाएगा एग्जाम में। अब भेजो तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ हॉर्स which unknown to both the parties was dead at the time of bargain is void, valid, voidable, illegal। And the aggrieved party, that is, the parties whose consent was obtained by fraud, may resign the contract only, affirm the contract only, resign or affirm the contract, none of these। Mistake of foreign law is treated in the same manner as mistake of Indian law, mistake of fact, misrepresentation और fraud। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखा दवाई का सर, एक भी बच्चे को आंसर नहीं आया सिंगल। एग्रीव्ड का मतलब होता है बेटे प्रताड़ित, जिसके साथ फ्रॉड हुआ हो या मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ हो। A promise made without intention of performing it amounts to fraud। Second, which of the following is not included in the term fraud?
concealment of facts in good faith. A false statement of fact made without any intention to deceive the other party falls under the category of an agreement for sale or purchase of horse which unknown to both the parties were dead at the time of bargaining is void. The aggrieved party, that is the party whose consent was obtained by fraud, may both C resign भी कर सकती है, confirm भी कर सकती है. Mistake of foreign law is treated in the same manner as mistake of fact. B. देखो कितने अच्छे बच्चे हैं मेरे, कितने प्यारी बात मानते हैं. देखो सबने अब सारे एक साथ भेजे हैं. थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच. So first person who has given all the correct answer is Mr. Sarthak Mohanty. Congratulations. Raj Viswas is saying, sir, if a person selling expiring food and the buyer does not know it, it is a fraud. Definitely it is fraud, and that is you will read in the chapter Sale of Good Act. Next, Mr. Pramod, congratulations. Mrs. Fareen Taj, congratulations. Mr. Rahul Patel and Mr. Muhammad Khan. And congratulations all of you who got all the correct answers. सभी को बहुत बहुत बधाइयां. थैंक यू सो मच. सबने मेरी बात मानी, सारे आंसर एक साथ भेजे. ठीक है सर. वॉइड क्यों होगा? यश इज आस्किंग सर वॉइड क्यों होगा? कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? ये फोर्थ की बात कर रहे हैं. बेटा जब बायलैटरल मिस्टेक हो गई ना, इसलिए वॉइड हो जाएगा. जब जब घोड़ा ही मर गया तो उसे किसको क्या बेचेंगे? खत्म हो जाएगा क्वेश्चन. So at this place we have a break of 8 minutes, not 5, not 10, 8 minutes, and we will join at after 8 minutes. ठीक है. अशोक जी प्लीज ब्रेक दे दीजिए बच्चों को. बच्चों we have
ओके, तो एक क्वेरी थी, ये यश बच्चे की क्वेरी आ रही है कि सर ये इस क्वेश्चन में वॉइड क्यों होगा? बेटा जो जिस समय बार्गेनिंग हो रही थी उस समय वो चीज थी नहीं जिसके लिए बार्गेनिंग हो रही थी। तो एक हम जो चीज दुनिया में है ही नहीं उसके लिए हम बार्गेनिंग नहीं कर सकते ना। वो बेच सेल और बेच करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो क्वांटिटी वॉइड हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। That is the legality of object and consideration. If we will discuss what are the cases where the object and consideration are unlawful. यहाँ हम बच्चे ये पढ़ेंगे कि कौन से केसेस हैं जहां पर ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन अनलॉफुल माने जाएंगे। Manish is saying, sir, if the customer did not make any effort to check the expiry date of food which was sold by seller. एक्चुअली इसका जवाब बेटे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं, सेल ऑफ गुड एक्ट में आएगा। और ये चीज क्या कहलाती है? कंडीशन। कंडीशन फुलफिल नहीं होने की वजह से ये गुड्स वापस हो जाएगा। इवन अगर दुकानदार ने जो बायर है, जो कस्टमर है, उसने देखा नहीं, घर पे जाके देखा, तो सेल ऑफ गुड एक्ट के अकॉर्डिंग ये चीज वापस हो जाएगी, कैंसिल। ठीक है, तो फर्स्ट केस इज unlawful object in considerations के, this is the first case. If it is forbidden by law, कोई ऐसा काम करना, कोई ऐसे काम का कॉन्ट्रैक्ट करना जिसे लॉ ने मना किया है, it is called unlawful and contract is void. To enter into a contract for that purpose which is forbidden, which is prohibited by law, in that case it is void, it is unlawful. Example 25, A contracted with B to deal in stolen goods. चोरी के माल को डील करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? void, because it is unlawful. Second point, important for examination point of view, if it is of a such nature that if permitted it would defeat the provision of any law. It means you can say it does not directly hit the law but indirectly hit the law. See the example. A was licensed under an excise act to run a liquor shop. The act forbade the creation of partnership to run the shop. A took B into partnership, held the agreement was. Okay, what was the case? There was license. A has taken the license for running liquor shop, but the law says this license will not be run in a partnership. Only the individual proprietorship will be applied. Normally, partnership, to enter into partnership is void? No. But specifically it was mentioned that this business could not be done in partnership. Then if A enter into partnership with B, the agreement is void. A ने लाइसेंस लिया एक लीकर शॉप, शराब की दुकान चलाने के लिए, ठीक है, और जिस एक्साइज एक्ट ने लाइसेंस दिया, उसने ये कहा कि आप ये बिजनेस पार्टनरशिप में नहीं करेंगे, आप ये प्रोप्राइटरशिप में ही चलाएंगे। अब मान लीजिए, देखिए नॉर्मली पार्टनरशिप करना कोई गैर कानूनी है नहीं, लेकिन जहां स्पेसिफिकली बोला हुआ था, अब मान लीजिए ए और बी ने पार्टनरशिप करके ये बिजनेस चलाया, तो ये पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? वॉइड। ठीक है बच्चे। थर्ड पॉइंट, इफ इट इज फ्रॉडुलेंट, द पर्पस इज टू मेक द फ्रॉड, द पर्पस ऑफ द बिजनेस इज टू मेक द फ्रॉड. A, B, C enters into partnership to run the business of fraud and distribute the earning in equal ratio. What is the case? A और B, C तीनों ने पार्टनरशिप की कि वो धोखा देने का बिजनेस करेंगे, जो भी कमाएंगे वो बांट लेंगे। ये एग्रीमेंट क्या माना जाएगा? बिकॉज इट इज बीइंग अनलॉफुल, इट इज वॉइड। क्लियर?
if it involves or implies injury to the person or property of another. अगर कोई ऐसा काम जिससे किसी की प्रॉपर्टी पर या किसी इंसान को नुकसान पहुंच रहा है तो ये void होगा, unlawful. A contract with B to burn the house of C. A contract with B to burn the house of C. As contract involves the property of C, the contract is unlawful and it is void. बहुत simple सा है बच्चे. If the court regard as it is immoral, bad character. Immoral means bad character. A asks B, if you arrange a girl for marriage with me, I will give you 50,000 rupees. This contract is void as it is immoral. ठीक है, बहुत simple से हैं. Where the court regards it as opposed to public policy, if the purpose of the contract is just opposed to public policy. Opposed to public policy means कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिससे पब्लिक को नुकसान हो सकता है, पब्लिक के खिलाफ हो सकता है. It is called unlawful and it is void. So these are the cases. We will discuss the cases which are considered as opposed to public policy. First is trading with enemy. Enemy means the person, the citizen of enemy country. उस देश का नागरिक जिससे हमारे देश की लड़ाई चल रही है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या माने जाते हैं? वॉइड माने जाते हैं. स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन. स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन मतलब कह सकते हैं कि सजा होना. स्टिफलिंग बचाने का कॉन्ट्रैक्ट. कोई किसी को सजा हो रही है, इफ एनीवन इज प्रोसिक्यूटेड and you are going to escape from prosecution, this contract is void. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है किसी को सजा से बचाने की, सजा मिलनी चाहिए थी उससे बचाने का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन मतलब सजा से बचाने का कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफेंस माना जाएगा, void. It is an agreement to abstain, रोकना, from prosecuting a person of for an offense. किसी क्रिमिनल एक्ट के लिए सजा होनी है, उसे बचा के ले जा रहे हो, it is a void agreement. A promise to drop a prosecution which he has instituted against B for robbery and B promised to restore the stolen property, the agreement is unlawful, but a compromise in case of compoundable offenses is valid. क्या मतलब है? Law is saying, example से कि एक प्रॉमिस है कि the person who should be prosecuted, the person who should be prosecuted for robbery, but the contract was entered to escape from the prosecution, this contract is void. But those cases where law permit the compounding adjustment, then it is allowed. कह रहा है ए ने प्रॉमिस किया बी से कि भाई मैंने तेरे खिलाफ जो डकैती का केस डाला है, क्योंकि तूने डकैती करी थी मेरे घर पर, मैं वो वापस ले लूंगा, बदले में तू मुझे जितना सामान चुराया है वो मुझे वापस कर दे. ये वॉइड है, क्योंकि रॉबरी क्या है? क्राइम है. चाहे 1 रुपए की रॉबरी हो चाहे 1 लाख की, क्राइम है और इस पर सजा होनी चाहिए. ठीक है, वापस करने से क्राइम खत्म नहीं हो जाता. अगर प्रॉपर्टी इसने वापस करी चुराई हुई तो क्राइम खत्म नहीं होगा. तो दिस कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हम उस सजा से बचा रहे हैं, चोरी की सजा से, तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन लॉ ने कुछ केसेस बताए हैं, कुछ ऐसे क्राइम हैं जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है, जहां पर हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ. तो वहां पर अगर कंपाउंडिंग हो रही है, प्रोसिक्यूशन बचाया जा रहा है, तो वो वैलिड माना जाए. एक सेकंड बच्चों, क्या पूछा आपने? आशुतोष सर, ट्रेड ऑफ फेलोनी. फेलोनी मीन्स होता है अपराध, घोर अपराध. एग्रीमेंट फॉर कंसीलिंग एविडेंस अगेंस्ट इज ए क्रिमिनल एक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट.
Maintenance and champerty. See, I am just discussing with you the example. एक एग्जाम्पल में दोनों चीज में क्लियर करूंगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी. प्लीज लिसन केयर. A says to B. A says to B. File the fake case against C. A says to B. File a fake case to C. And for this purpose, I will pay you the cost. A ने B से कहा तुम C के खिलाफ एक फेक केस फाइल कर दो. A ने B से कहा तुम C के खिलाफ एक केस फाइल कर दो एंड मैं उसका खर्चा आपको दे दूंगा. दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेंटेनेंस. A asked B to file a fake case against C and promise to pay the cost of this case. This is called contract of maintenance. Clear इतनी बात? But if in this case one line is added, see, A asked B to file a fake case against C. I will pay the cost and I will share what you get from C. I will share from what you get from C. A ने B से कहा कि तुम C के खिलाफ एक फेक केस फाइल कर दो, सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, लेकिन जो आपको C से मिलेगा उसमें मेरा भी शेयर होगा. ये चैम्पर्टी के. इसका मतलब क्या हुआ कि केवल खर्चे के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, फेक केस में वो मेंटेनेंस खिलाया और उसमें शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट को हम, वो चैम्पर्टी खिलाया, लेकिन लॉ की नजरों में दोनों ही ये वॉइड है. क्लियर इतनी बात? If contract just to maintain for a fake case is a contract of maintenance and to share the benefit, then it is a case of chemparty, and both the maintenance and chemparty are unlawful and these are void as per. क्लियर इतनी बात? Yes is saying, सर रॉबर्ट से सब कुछ वापस लेके फिर केस फाइल कर दें तो इसमें कौन गलत होगा? देखिए वो केस ही नहीं है, वो जो एग्रीमेंट किया कि सब आपने रॉबर्ट से एग्रीमेंट किया कि आप मुझे सारा सामान वापस कर दो, मैं केस नहीं करूंगा, ये तो एग्रीमेंट ही वॉइड है. आपने क्या किया कि सारा पैसा वापस ले लिया, फिर आपने केस फाइल कर दिया. अब चोर ये थोड़ी कहेगा कि सर देखो उन्होंने मुझसे एग्रीमेंट किया था कि मैं सामान वापस कर दूं, केस नहीं करेंगे, अब ये केस कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं. ये नहीं हो सकता, पनिश तो होगा ही. क्लियर इतनी बात? सी एग्जाम्पल नंबर 32. A offers to pay B rupees 2000 if B will sue C. A's motive is to hurt C. This agreement between A and B is maintenance agreement, right? See example number 33. A agrees to pay the expenses if B sues C, and B agrees to give away one half of any proceed received by B as a result of the said suit if the object of the contract just to assist the other party in making the reasonable claim arising out of the contract, then to have a fair share in the profit is valid. क्या कहा एग्जाम्पल 32 में? क्या कहा? ए बी को ऑफर किया कि 2000 रुपए मैं दूंगा आपको, सी के खिलाफ एक फेक केस कर दो. ये क्या कहलाया? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेंटेनेंस. एग्जाम्पल 33 में बी ने सी से कहा कि तुम, ए ने बी से कहा कि सी के खिलाफ केस फाइल कर दो और सी से जो तुम्हें मिलेगा वो मुझे आधा मुझे दोगे. ये कहलाया केस ऑफ चैम्पर्टी. लेकिन लॉ ने कहा इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज जस्ट टू हेल्प द अदर पार्टी इन रीजनेबल केस, रीजनेबल क्लेम, अगर क्लेम सही है, फेक नहीं है, तो ये परफेक्टली वैलिड माना जाए. अगर फेक केस है, इफ द केस इज फेक, it is unlawful, it is void, but case is genuine, reasonable, it is valid. Clear इतनी बात बच्चों? So if contract just to help in fake case is maintenance, and taking the benefit, sharing the benefit in that fake case is the case of maintenance, chemparty, both are void.
Next point, interference with the course of justice. See the example, I think this line will be clear to you. An agreement to pay a bribe of 5 lakh to a judge to change his decision is unlawful end point. किसी के जज के साथ एग्रीमेंट करना 5 लाख की रिश्वत देने का कि वो अपना डिसीजन बदल दे, ये अनलॉफुल है अकॉर्डिंग टू द लॉ. एक क्वेरी है रितु की, if someone is fighting a case, then some other person should give his maintenance and then take the share, what will be happen then sir? मैंने कहा ना बच्चे, अगर वो केस जेन्युइन है, सही है, उसमें आप जेन्युइनली आप हेल्प कर रहे हो तो वो वैलिड है. उसमें आपने फॉर एग्जांपल जेन्युइन केस है, उसमें कोई एडवोकेट हेल्प कर रहा है, फीस चार्ज कर रहा है शेयरिंग बेसिस पर, और वो जेन्युइन है तो वो वैलिड माना जाए. Marriage brokerage contract, these contracts are void in India. I think they are void in everywhere. Marriage brokerage contract हमेशा immoral होते हैं, void होते हैं. See the example number 35. An agreement to pay money to a person hired to procure a wife is opposed to public policy and therefore void. Harsh is saying, sir, so we can say maintenance may or may not be valid. No. Normal language, maintenance and champalty are void. But you have to prove that maintenance is for genuine reason, then it is valid. But in first step, maintenance and champalty are void. Clear हो गया बच्चों? Interest against obligations. It means if you are charging any price or money for your duties, for your obligations, then it is void. आपकी कोई ड्यूटी है काम करने की, फिर भी आप पैसा मांग रहे हो, that is void. See, I have taken the example, taken in previous classes, the example of suppose a bank officer charging the money for making the entries in the passbook. It is void because you cannot claim. You are charging, you are getting a salary for this purpose. The following are the examples of agreement that are void as they tend to create an interest against obligations. The object of such agreement is opposed to public policy. C. An agreement by an agent to receive without principal consent compensation from another for the performance his agency is made. एजेंट प्रिंसिपल की सहमति के बिना किसी से पैसे क्लेम कर रहा है अपने काम के, ये इनवैलिड माना जाए. A who is the manager of firm agrees to pass a contract to X if X pays ₹2,000 privately, this agreement is void. मैनेजर है, उसने कहा मैं 2,000 रुपए मुझे दे दो या मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट पास कर दूंगा, ये void. सर ब्राइब मीन्स रिश्वत, बेटा ये तो बहुत पुराना शब्द है. Sale of public offices. Agreement for sale or transfer of public offices and titles or procurement of public recognition like Padam Vibhushan, Paramveer Chakra for monetary consideration. कोई पब्लिक को नौकरी पाने के लिए पैसा देना या ये पद्म विभूषण या परमवीर चक्र पाने के लिए पैसा देना, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? void. See the example. An agreement to pay money to a public servant in order to induce him to retire from his office so that another person may secure the appointment is void. एक एग्रीमेंट हुआ एक पब्लिक सर्वेंट से कि भैया तुम एक काम करो, हम तो पैसे देंगे, तुम नौकरी छोड़ दो ताकि दूसरे को जॉब नौकरी मिल जाए. ये एग्रीमेंट क्या है? void है, क्योंकि आप पैसे देख के एक पब्लिक ऑफिस में कोई पोस्ट सिक्योर कर रहे हैं. Sadhana is asking, sir, do we complete void agreements also today? Yes, definitely, बेटा. Void agreements आज खत्म हो जाएगा, आज ये यूनिट खत्म हो जाएगी. An agreement to procure a public recognition like Padam Vibhushan for reward is void. अगर आपने कोई पब्लिक अवार्ड लेने के लिए पैसे दिए हैं, इस तरह का एग्रीमेंट किया है, तो ये void माना जाएगा. Agreement for creation of monopoly. See the example. Let's say
Agreement, let's say an example. Suppose Mr. X enter into a contract with the Nagar Palika, municipal corporation. Mr. X enter into a contract with municipal corporation that Mr. X will pay rupees 1 lakh to municipal corporation if in the market municipal corporation allow only Mr. X to open the shop and no other will be allowed. X ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से कॉन्टेक्ट किया कि वो 1 लाख रुपया देगा अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन केवल उसे मार्केट में दुकान खोलने के लिए अलाउ करे, बाकी को मना करे. तो दिस एग्रीमेंट क्रिएट्स अ मोनोपोली एग्रीमेंट एंड दिस एग्रीमेंट इज परफेक्टली void. A contract with municipal corporation for disallowing all the shopkeeper from the market other than A, this contract is clear. Now these are the agreement, वो हमने पढ़ लिए, ये जो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी थे, ये वो एग्रीमेंट है जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड void है. These are the agreement expressly declared void. First is agreement by incompetent parties, section 11 we have already discussed बच्चे. Agreement made under the mutual mistake of fact, already discussed. Agreement for the consideration or object which is unlawful, section 23 we have already discussed. Agreement, the consideration or object of which is unlawful in part, not full. If any part of single consideration for one or more object or any one or any part of the any one of the several consideration for a single object is unlawful, the agreement is void. In simple words, if the part of consideration is unlawful, contract is void. अगर कंसिडरेशन अनलॉफुल है तो void है, अगर पार्ट में कुछ पार्ट अनलॉफुल है तो void. Agreement made without consideration, section 25 already discussed. Agreement in restraint of marriage is void except child marriage. Child marriage is not legal in India. So any agreement to restrain the marriage of a major is definitely a void agreement. Agreement in restraint of trade, किसी को व्यापार करने से रोकने का contract. Any agreement by which any person is restrained from exercising a lawful profession. कोई lawful व्यापार कर रहा है उसे रोका जा रहा है तो ये contract क्या होंगे? Void. But important. But this rule is subject to the following exception. Just a moment, बच्चों. Okay. But this rule is subject to some exception, means in these cases, agreement even in restraint of trade is not void. Restraint मतलब रोकना. Restraint मतलब बेटे रोकना. Exception to point number J. J point means, I think J nahi, it is point number 7. Please correct it. It is not J, it is 7. Sale of goodwill. Sale of goodwill. A seller of goodwill of a business may be restrained from carry on a similar business in specified local limits, provided that such limits appear to the court reasonable regarding being had to the nature of business. See the example. Let's say a name Haldiram. Haldiram is a own goodwill. If owner of a Haldiram sells their shop to Mr. X, and they charge goodwill price for using the name by X of Haldiram. Mr. Haldiram जो ओनर हैं वो अपना ब्रांड बेच रहे हैं मिस्टर एक्स को और उससे गुडविल पैसे चार्ज कर. In that case, Mr. X make the restriction on the owner of Haldiram that you have sold me the goodwill
So you cannot start the similar business in that specific area and for such specific limits which are reasonable. यानी कि अगर एक आदमी को गुडविल बेच रहा है किसी को, तो जो बायर है गुडविल का, वो सेलर को रोक सकता है सेम बिजनेस करने से पर स्पेसिफिक एरिया में और उन टर्म्स पर जो रीजनेबल हो. अब रीजनेबल कौन डिसाइड करेगा? दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट. सेक्शन 26. सेक्शन 26 तो वेरी सिंपल बेटा. एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज. किसी को जो मेजर है, उनकी शादी योग्य है, उनको आप उनकी शादी रोकना, कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं किसी से, तो वो एग्रीमेंट वॉइड है. लेकिन चाइल्ड मैरिज का कोई एग्रीमेंट है, दैट इज परफेक्टली वैलिड बिकॉज चाइल्ड मैरिज इलीगल इन इंडिया. एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड में सेकंड पॉइंट एक्सेप्शन, पार्टनर्स एग्रीमेंट. I think you just get the reading of this point. This is not very much important for your examination point of view. Partners agreement, a partner shall not carry on any business other than that of the firm while he is partner. If partners में agreement हो सकता है, agreement may be between the partners that at that time a person is partner firm, he will not work other than the firm. This is valid agreement. एक जैसे एबीसी पार्टनर है, तो दे मे एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट कि दे विल वर्क ओनली विद द फर्म. इट इज वैलिड. एन आउटगोइंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर may agree with his partners not to carry on the business similar to that of firm within the specified period or specified local limits. जो छोड़ के जा रहा है फर्म को, वो एग्रीमेंट कर सकता है बाकी जो पार्टनर बचे हुए हैं कि वो जो जा रहा है वो सेम बिजनेस नहीं करेगा पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम की. Partners may, upon or in anticipation of the dissolution of the firm, make an agreement that some or all of them will not carry on a business similar to that of the firm within the specified period or within the specified local limits. क्या मतलब बच्चों इसका? कि अगर फर्म डिसोल्यूशन में जा रही है, if firm is going to be dissolved, in that case the partners may do the agreement between themselves that all of them या some of them will not start the same business in particular area or for particular period. जब फर्म डिसॉल्व हो रही हो तो पार्टनर आपस में एग्रीमेंट कर सकते हैं कि जो सारे पार्टनर या कुछ पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर टाइम के लिए सेम बिजनेस हो. Where the goodwill of the firm is sold after dissolution, a partner may carry on the business competing with that of buyer and he may advertise such business. क्या कहा आपने? अगर कोई where goodwill of the firm, goodwill बेची गई फर्म की, तो पार्टनर सेम बिजनेस कर सकता है, एडवर्टाइज कर सकता है, बट सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट. अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है तो नहीं. बिटवीन हिम एंड बायर, सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट क्या ही काम नहीं कर सकता? फर्म का नाम यूज नहीं कर सकता. He cannot use the firm name. He cannot represent as carrying on the business of the firm. ये नहीं कह सकता कि वो पुरानी फर्म का ही बिजनेस कैरी कर रहा है. और solicit, demand custom of the persons, means customers who were dealing with the firm before the dissolution. यानी कि जो पुराने कस्टमर से उनसे काम नहीं मांग सकता ये कह के कि भैया मैं तो पुराना ही पार्टनर हूँ, उसी बिजनेस कर रहा था, मुझे काम. And last one, any partner may recording in progress. Such agreement are neither in restraint of trade or opposed to public policy. कह रहा एक आइस मतलब बर्फ बनाने वाली कंपनियों ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो मिनिमम प्राइस मेंटेन करके चलेंगे, इससे क्वालिटी बनी रहे, तो ये वैलिड है, परफेक्ट पब्लिक के इंटरेस्ट में है, तो ये वैलिड है. Service contracts. Sometimes an employee, by the terms of the service, is prevented from accepting any other engagement during his employment
or a similar engagement after the termination of service. Means, suppose Mr. A is the employee of Mr. B. Mr. A is employee of Mr. B, and there is agreement between A and B that A will not do job anywhere else against B until he is in a job with B. It is valid. But even after leaving the job from B, it is invalid. A एम्प्लॉय है बी के यहाँ, उसने बी से कॉन्टेक्ट किया, क्या किया कि वो जब तक बी के यहाँ नौकरी कर रहा है कहीं और काम नहीं करेगा, ये वैलिड. नौकरी छोड़ने के बाद भी नहीं करेगा, ये इनवैलिड. So law says as regard the first restriction, it is valid and is not in restraint of trade if it is to operate while the employee is contractually bound to serve the employer. Normally, the doctors are usually debarred from private practice during the term of their employee. Normally, डॉक्टरों को कहा जाता है भैया आप जॉब कर रहे हैं तो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करें. It is valid. But in second case, it is agreement in restraint of legal proceedings. इसी legal काम को करने के लिए रोकना, it is avoid. An agreement in restraint of legal proceeding is the one by which any party thereto is restricted absolutely from enforcing his right under a contract through a court, or which abridges the usual period for starting the legal proceeding. A contract of this nature is perfectly clear. However, there are certain exceptions. A contract by which the parties agree that any dispute between them in respect of any subject shall be referred to arbitration, and that only the amount awarded in such arbitration shall be recoverable, is a valid contract. So please listen, what is the arbitration? Arbitration is just like panchayat. Suppose in a firm, the partner decided that in case of any dispute between the partners, they will not go to the court, they will decide by arbitration. Now, what is arbitration? In that case, suppose there are two partners, A and B. A and B will decide one arbitrator as a counselor. Okay? He will give the decision. In case A and B are not agree for a single person, then A will appoint other and B will appoint other, and the appointed person will again appoint one person. Now there are three arbitrators and decision on the taken by the majority. ठीक है. आर्बिट्रेशन क्या होता है? आर्बिट्रेशन एक पंचायत के रूप में होता है. इस जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी पार्टनर ने डिसाइड किया कि हमारे आप लोगों को जब झगड़ा होगा तो हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम आर्बिट्रेटर के थ्रू ही ये डिस्कशन कर लेंगे. तो मान लीजिए कोई डिस्प्यूट हुआ ए और बी के बीच में, तो ए और बी मिलके एक आर्बिट्रेटर जस्ट लाइक काउंसलर को अपॉइंट करेंगे. अगर मान लीजिए ए और बी की सहमति नहीं बनती है एक आदमी के लिए, तो एक ए अपॉइंट करेगा, एक बी अपॉइंट करेगा, जो दो अपॉइंट हुए वो मिलके एक अपॉइंट करेंगे, तीन लोग हो जाएंगे, मेजॉरिटी पर डिसीजन. जो डिसीजन दिया जाता है उससे आर्बिट्रेशन में अवार्ड बोलते हैं. द डिसीजन टेकन इन द आर्बिट्रेशन इज कॉल्ड अवार्ड. ठीक है. Similarly, a contract by which the parties agree to refer to the arbitration any question between them which have been arising or which may arise in future is valid, but such a contract must be in writing. It means if you are taking the decision that you will decide the dispute under the arbitration, that agreement should be in written. Simple सा फंडा. Next point. Agreement, the meaning of which is uncertain. अगर कोई meaning ही uncertain है तो contract क्या होगा बच्चे मेरे? Void. Agreement, the meaning of which is not certain or void. The uncertainty may be as to the existence, quantity, quality, price, title, the subject matter. For example, A agrees to sell B 100 tons of oils. There is nothing to show what kind of oil is intended. The agreement is void because of uncertainty. A agrees to sell to B my white horse for rupees 5,000 or rupees 8,000. There is nothing to show which of the price was to be given. The agreement is
A agrees to pay a certain sum when he was able to pay. Hence the agreement was void for uncertain. क्लियर इतनी बात? आई थिंक ये तो क्लियर हो चुका होगा बच्चों. Now the last topic I think for avoid agreements is wagering agreement or wag. Wagering, just like simply simple about wagering. Suppose there is a contract between A and B. Suppose there is a contract between A and B. A says, if there is rain on Monday, I will give you 100 rupees. And if it not rain on Monday, you will give me 100 rupees. A ने B से कहा कि अगर मंडे को बारिश हुई तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, नहीं होगी तो तुम मुझे 100 रुपए दो. इस तरह की एग्रीमेंट कहलाते हैं वैगरिंग. क्या है ये? लिसन. A wager is an agreement between two parties by which one promises to pay money or money's worth on the happening of some certain event in consideration of the other party's promises to pay if event does not. क्या कहा? वैगर क्या है? एक दो पार्टियों के बीच में एग्रीमेंट है, पे करना है मनी या मनी जैसी कोई चीज, मनी जैसी कोई चीज, कुछ घटना के होने पर जो घटना अनसर्टेन हो, और बदले में क्या मिलेगा? वही पैसे मिलेंगे अगर घटना नहीं. घटना के होने पर पैसे मिलना और नहीं होने पर वापस देना, ये क्या कहलाएगा? वैगरिंग. एंड दिस एग्रीमेंट इज वॉइड एज पर इंडियन लॉ. If A and B enter into agreement that A shall pay B rupees 100 if it rains on Monday and B shall pay A the same amount if it does not rain, it is wagering. ठीक है? Essentials क्या निकले wagering के? Promise to pay money or money's worth. Clear? Performance must be dependent on the event happening or non-happening. Event must be uncertain. It means event may be happen, may not be happen. Mutual chances of win or lose. Both the parties have chance to win or lose. No control over the event. No party has control over the event. And no other interest in the event. This is why contract of insurance is not wagering. Insurance में, in case of insurance, both parties have the same interest. No one wants the party must be died. ना तो इंश्योरेंस कंपनी चाहती है वो आदमी मर जाए, ना वो आदमी चाहता है मैं मर जाऊं. तो दोनों का सेम इंटरेस्ट है, इसलिए इंश्योरेंस को वैगरिंग नहीं कहा. Effect of wagering agreement. Wagering agreements are void but not illegal. However, in Maharashtra and Gujarat, wagering agreement declared as. Someone is saying no. It is depend upon the probability. Just like सट्टेबाजी. Suit to recover money deposited under wagering agreement. Let's say an example. In the previous example, see the example of 45. In this example, let's say A and B both agree that they will contract with C, and C will keep the money from both sides A and B, 100 each, and give it back to the winner, and C will charge a 10 rupees as commission from the winner. क्या कहा मैंने आपसे इस एग्जांपल में? A और B ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि A B को 100 रुपए देगा अगर बारिश होती है मंडे को, एंड B A को देगा अगर बारिश नहीं होती है. दोनों ने कहा भैया हमें एक दूसरे पर भरोसा नहीं है. हम क्या करते हैं, हम C को बुलाते हैं, C भैया तुम ऐसा करो 100 मेरे रख लो, 100 इसके रख लो, और जो जीते उसे दे देना, और इसके लिए हम तुम्हें 10 रुपए कमीशन देंगे, जो जीतेगा वो कमीशन देगा. ठीक है, क्लियर? अब आते हैं स्लाइड पर. Now what happened in this agreement? Suppose A wins. A is to claim only rupees 90 from C because the agreement between A and B is void. So
A cannot claim the 100 rupees of B. But the agreement between A and C and agreement between B and C is valid. So C can claim rupees 10 from the winner and A can claim only rupees 9. इस केस में क्या हुआ, मान लो A जीत गया, तो जो कॉन्ट्रैक्ट A और B का था वैगरिंग, वो तो वॉइड हो गया, लेकिन जो A और C का था या B और C का था वो वैलिड है। जब A जीत गया तो C को राइट है A से 10 रुपए क्लेम करने का। इसका मतलब A कितने क्लेम कर सकता है C से? केवल 90 रुपए। जो B वाले 100 रुपए हैं वो क्लेम कर ही नहीं सकता क्योंकि वो एग्रीमेंट तो वॉइड। मनी डिपॉजिटेड विद अ पर्सन called stakeholder to be paid to the party winning upon a wager cannot be recovered by the winner. On the other hand, the loser can recover his deposit from the stakeholder. इसका मतलब क्या हुआ कि B can claim the 100 rupees from C and A can claim only rupees 90 from C. But where the stakeholder pays the money to the winner, if C has paid 190 rupees to A, B cannot claim 100 rupees from C, but B can claim 100 rupees from A. मान लीजिए C ने सारे पैसे 190 रुपए A को दे दिए, तो B C से कुछ भी क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन B A से 100 रुपए क्लेम कर सकता है क्योंकि A और B का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड था। The same way, collateral transaction, the validity of collateral transaction cannot be challenged because the main contract is wager and have void. Example, in the wagering contract, the broker is entitled to collect the, वही हम डिस्कस किया, we have discussed that same. See, the contract between A and C and B and C is perfectly valid. ठीक है? Exceptions. Following transactions are not wager. Please ये समझ लीजिए, game of skill, crossword, picture puzzles और athletic competitions. A subscription or contribution or an agreement to contribute towards any plate or cup that is prize, the value of rupees 500 or above to the awarded to the winner or winners of the horse race is valid. Share market transaction in which delivery of stock and shares is intended to be given or taken, ये भी valid. Insurance contract is valid. Agreement to do impossible act is always void. ठीक है, लेकिन अब एक चीज है कि जो मैं दोबारा डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, वो मैं अगर रिपीट कर रहा हूं वैगरिंग, तो सी द समरी ऑफ वैगरिंग. Wagering is an agreement to pay money or money's worth on the happening of uncertain event in consideration to recover the money on non-happening of an event, and this agreement is void. क्लियर इतनी बात? वैगरिंग एक एग्रीमेंट है जिसमें मनी पे की जाएगी किसी घटना के होने पर, और कंसिडरेशन में क्या मिलेगा? वही मनी, घटना नहीं होती है. ये एग्रीमेंट वैगर है और लॉ में वॉइड है. बट इस वैगरिंग के लिए इफ देयर इज ए कोलैटरल ट्रांजैक्शन, सपोर्टिंग ट्रांजैक्शन, सेकेंडरी ट्रांजैक्शन लाइक फॉर कमीशन और कोई गिफ्ट, ऑन दिस वैगरिंग दे आर वैलिड. We have discussed the example. A and B enter into a contract that A will give the 100 rupees if it rains on Monday, and B will give it if not rains on Monday. This is wagering agreement and void. Neither A can claim 100 from B, nor B can claim A from A. But there was a contract with Mr. C of both parties A and B that C will keep the money as a security from both sides and charge rupees 10 as commission. This agreement is valid and C can claim the rupees 10 from the winner. This is the summary. So time for super over 4. I think ईशा अब क्लियर हो गया होगा बेटा आपको. यश सर लॉ लर्न करना पड़ेगा. देखो लर्न तो करना ही पड़ेगा, लेकिन लर्न से बेटर है प्रैक्टिस हो जाएगी. आप इतना पढ़ते जाइए, रीडिंग करिए, आपको यूज्ड हो जाएंगे आप इसके.
Tarun is saying, sir, once again, I understood very well. All the doubts are clear. Thank you, बच्चे. Thank you so much. आपको clear हो गया. अब फोर्थ सुपर ओवर की तैयारी कर लीजिए. स्टार्ट करते हैं. All agreements are contract only if they are made for lawful consideration with lawful object. It is given in section 1023A from both A and B, none of these. ध्यान से करना बच्चों इसको. Next question. A, B, and C entered into an agreement to carry on the some fraudulent business and to share the profit in equal share. This agreement is valid, void, voidable, contingent. Next. An agreement which prevents a person from marrying a particular person or a person of particular class is valid, void, voidable, allowed with court permission. Fourth, an outgoing partner can be restrained from carrying on the similar business only. Any business, both of these, none of these. Regulation as to the opening and closing of the business in the market are not legal, valid, void, illegal. A agrees to enclose a space between two parallel lines and B, and A and B agrees to pay rupees 5,000 to A for this act. This is an agreement to do illegal act, impossible act, wagering act, forbidden act. तो बच्चे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. This statement is given in section 10. Next. ABC entered into an agreement to carry some fraudulent business and to share the profit. This is a void agreement. An agreement which prevents a person from marrying a particular person or a person of particular class. It is a void agreement. Next. An outgoing person partner can be restrained from carrying on the similar business. भाई एनी बिजनेस कैसे कर सकते हैं? कुछ तो करेगा बेचारा, भूखा का थोड़ी रहेगा. Regulation as to opening and closing of the business in the market are valid. टाइमिंग्स का है ये.
A agrees to enclose a space between two lines. It is impossible act. So who is the lucky one? First name is Mr. Sarthak Mohanty. Congratulations, bete. तो आसान था बच्चों, आज तो तुम्हारे आंसर सही नहीं आ रहे. बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे 23 और 10 को लेकर सेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 में, जबकि 23 में बताया क्या अनलॉफुल है. ये लाइन कहां पर है? सेक्शन 10 में है. अब नेक्स्ट वन इज तरुण सिन्हा. कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा. अक्षता कनितकर. कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा. ऐश्वर्या, कॉन्ग्रेचुलेशन. ओके, सो सार्थक इज सेइंग सर थैंक यू सर, योर टीचिंग इज माइंड ब्लोइंग. थैंक यू बच्चे मेरे. और मनीष इज आस्किंग सर बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक्स ऑन कंटिन्यूअस बेसिस लाइक ए पर्सन डेली सेल्स एंड बाइज स्टॉक इज वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट और वैलिड? इट इज वैलिड, अलाउड है भाई ये तो. So this was the lecture. This was the provisions for today's session. I think hopefully, and I think you enjoyed the law. लॉ अब मेरे ख्याल सब्जेक्ट बन गया होगा आपका फेवरेट सब्जेक्ट. इतना अच्छा होगा कि शायद अब आप पढ़ोगे, और आई थिंक नेक्स्ट क्लास में पक्का आप लोग और रिवीजन करके आओगे. In the next class, we will have a we will start unit number 4. Thank you so much. Thank you everyone. And thank you so much. Bye. All the best.